ये भी सदियों से चलता आ रहा है, घर का काम तो औरतें ही करती है ना। अपने रूम में बैठ कर नंगा घूम, बंद कर दरवाजा, मुझे क्या करना है? The potential he has is god level. Nobody realizes that every kid is different. मैं उनके लिए केक लेके जाता था, वो केक धिक्कार देती थी. Pressure of लोग क्या करेंगे. She started crying, she started threatening me. Most of the people in our country, they don't acknowledge content creation as a career. I have not seen a happy couple. हमसे कभी पूछा ही नहीं गया कि बेटा आपका काम कैसे चल रहा है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, how was your day बेटा. कल सिंधी में बात किया जा रहा है एंड वो बहू को वो समझ नहीं आ रहा बिकॉज तुम सेम लैंग्वेज की नहीं हो, तुम अलग हो. ये तो मेरी बेटी जैसी है, बट बेटी का ट्रीटमेंट एंड बहू का ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. So welcome to Let's talk about it. yet another episode of Why, Bisu? Why are we not living with our parents yeah, that's and in-laws? we get so many DMs, so many comments about not living with our parents. Yeah. And why do we live in a nuclear family and didn't actually... Nuclear is just you and me. Nuclear is just you and me. Yeah. So, and why are we not living with our parents? So it's been a lot, there has been a lot of chatter about this Yes. part of our life. So let's address it and let's Yeah. talk about it. Yes, it's घमासान एपिसोड होने वाला है. Okay, बहुत सारे लोग ऑफेंस ले लेंगे. ठीक है, Maybe. डिस्क्लेमर दे देंगे ना. So disclaimer ये है, Yeah. we don't mean that we don't love them. Of course, we love them a lot. We don't disrespect them. We respect them a lot. And it doesn't mean that we have no contact with them. Yeah. Or there's a lot of societal pressure कि अरे शादी करके तो इन लॉज के साथ ही रहना होता है ना, मतलब ये तो बेसिक है. हाँ. पर सबका बेसिक अलग अलग होता है गाइस. सबका नॉर्मल अलग होता है. So this is what works for us as couple. This is what we've chosen Yeah. to live our life like. Yeah. And a lot of people may agree or disagree, but we Yeah. are keeping our points here. Yeah. That's why we are going to talk about in this episode that reasons why we don't live with our parents and in-laws. There are several reasons which we are going to take. You have something to say to the audience. Oh, I have something important announcement to make. Yeah. Guys, subscribe करना है. मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मैं सीधा आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा. सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट तो करना ही है. ठीक है. चाहिए कुछ पॉपकॉर्न चाहिए, डाइट कोक नहीं मिल रहा है मुझे पता है, नॉट स्पॉन्सर्ड, बट ठीक है यार, कोक जीरो पी लो. नो, सेम ही है, आगे पीछे ही है, वो ज़्यादा नहीं है. सो सब्सक्राइब. ओके, सो आई वांट टू से दैट दिस डिसीजन ऑफ नॉट लिविंग विद आवर पेरेंट्स / in-laws was not just decided in one day. ये 1 साल 2 साल की मेहनत है जो हमने बहुत पुश किया अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को कि लिसन, वी आर गोइंग टू नॉट लिव विथ यू एंड यू आर गोइंग टू बी ओके. थोड़े से डिस्क्लेमर उनको भी देने पड़ गए थे तो स्टार्टिंग में, बट दे वर नॉट अग्रीइंग. So tell me something, Devesh. हाँ. For a girl, it's very normal Hmm. to leave the house, to go into the in-laws' house. Yeah. First For of all, you, it's not normal for you guys also. It takes a lot. Uprooting all your life all of a sudden and living in a very अनजान घर जहाँ पे आपकी कोई मेमोरीज नहीं, आप बनाने वाले हो मेमोरीज. तो uprooting your whole life, whole existence of and 20, suddenly you start 27 living years. with almost strangers, if I'm not wrong. You just know them because आपकी मैरिज हुई है और just अभी स्टार्ट हुआ है आपको उनके साथ बातचीत करना एंड हंसी ठट्टा करते हुए. So yeah, I mean it was not easy. So for us but for us society has made this default setting कि लड़की तो अपना घर छोड़ती है. Yeah. ये होता आया है एंड ये होता रह रहा है अभी भी. But for you, I'm sure as a guy, it must have been really difficult to convince your mom. Yeah. And your other relatives who were in the house because you were earlier living in it was a joint family. It was a cultural shock. Let me tell you, it was not easy. मैंने 2 साल पहले से ही मम्मी को बताना शुरू कर दिया था कि मम्मी listen, this is going to be the scenario. I am not going to live because the childhood से ही environment is not such that कि I can bring my wife into this home.
the conversation that we have in our family is not suitable, क्योंकि वो नया बंदा आ रहा है, मुझे उसको शॉक नहीं करना है, मुझे उसको शॉक नहीं देना है, मुझे उसको परेशान नहीं करना है, मुझे उस बिकॉज जो एनवायरनमेंट में मैं रहा हूँ, आई डोंट वांट समवन टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट. उसके सबसे Yeah. पहले तो एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, सेफ स्पेस बनानी पड़ेगी. तो वो सेफ स्पेस कैसे बन सकती है जब आप सेम चीज़ में रह रहे हो और सेम प्रॉब्लम झेल रहे हो. तो मॉम वॉज नॉट टेकिंग मी सीरियसली व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड टू टेल हर दैट कि लिसन, मैं नहीं रहने वाला हूँ, दिस इज़ माई प्लान, आई वॉन्ट टू लिव अलोन विथ माई वाइफ एंड आई एम गोइंग टू हैव माई जैसा भी घर होगा 1 BHK होगा या 1 रूम किचन भी होगा, तो मैं अलग रहूँगा बिकॉज मुझे मेरी सारी चीज़ें करनी है. आई वॉन्ट टू टेक अप दिस चैलेंज. शी यूज टू टेक मी वेरी लाइटली, क्या है कि जी चले कुछ भी बोल रहा है तू, तो नहीं ऐसे. तो जब शादी के नज़दीक आए, 6 महीने हुए, अगेन आई हैड टू कीप टेलिंग हर एवरी नाउ एंड देन कि लिसन, आई एम गोइंग, यू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज तेरे से मुझे कुछ रिएक्शन मिल नहीं रहा, तू मुझे बहुत हल्के में ले रही है. तो जब 6 महीने नज़दीक आए तो शी लाइक नो 6 महीने में तू देख, शादी के 6 महीने में तू वापस आ जाएगा, आई नो तू नहीं कर पाएगा, तेरे में वो है ही नहीं, यू डोंट हैव इट इन यू एंड ऑल. सो आई वॉज लाइक ये क्या बोल रही है यार, ऐसा क्यों बोल रही है. तो मैंने बोला चल ठीक है, मैं चैलेंज लेता हूँ अपनी लाइफ के साथ. आई विल टेक दिस अप विथ माई सेल्फ एंड आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट कम बैक, आई लिव हैप्पीली. So I took this up as a challenge, and then I kept on again telling her कि listen, अभी 4 महीने बाकी रह गए, शादी की तैयारी चल रही है, 2 महीने बचे हैं, कपड़े की शॉपिंग हो रही है, all the preparations are happening, and then I don't know, one fine day she started crying and all. हमारी कुछ तू मैं हुई थी मम्मी और मेरी, and then she started और उस बीच में ये बात निकली कि listen, I am going to not live, Yeah. you know, You because kept on बहुत ज़्यादा reminding. रजिस्टर कराना पड़ा बिकॉज उनको एक बारी में शायद नहीं समझ में आ रहा था. तो I had to keep on It must be registering. difficult for her also It's, to yes, understand. it of is, it course. is. ममता तो है ना यार, माँ की ममता है वो, you can't justify that ममता. It is, ममता है तो है, वो मम्मी का प्यार है, बच्चों उसके प्यार है, या जो भी बोल लो, लगाव बोल लो, whatever name or definition you give, it is there. So suddenly living 32 years with her and suddenly not living with her one fine day, for her also the thought, मैंने उनके हिसाब से भी सोच के देखा, बट अभी मेरी भी तो फर्स्ट इनिंग हो गई है. 32 years I've lived with her, I need to be a different human being altogether. तो मुझे रहना था अलग. Then she started crying like 2 months wedding Before का the बाकी है, marriage. and then she was not, उसका इमोशनल आया बहुत ज़्यादा. Because she understood that, oh my god, it's real. Now हाँ, it's अब ये happening. बोल रहा है, इतने साल से बोल रहा है, मतलब मुझे तो लग रहा था कि नहीं, ये तो ऐसे ही बात कर रहा है, ये सीरियसली नहीं है, जाने वाला है. बट लिटिल डिड शी नो दिस वाज सीरियस. नाउ इट हैज स्टार्टेड टू हिट हर. तो शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड टू थ्रेटन मी कि मैं Threaten is a strong word, just like giving you emotional ब्लैकमेल. हाँ, मम्मी लोग चूरन, इमोशनल like ब्लैकमेल emotional करते हैं ना चूरन, थोड़ा हाँ. सा, यार तू चला Right. जाएगा तो मैं अच्छी से नहीं रहूंगी, मैं दवाइयाँ नहीं लूंगी, मैं खुद का अभी ध्यान नहीं जैसे रखूं. उनको अभी डायबिटीज है उनको, तो मैं शुगर खाऊंगी बहुत सारा, मैं फिर तला हुआ खाऊंगी. But that must have given you a lot of guilt also, right? यही तो है ना यार, पेरेंट्स अननोइंगली बहुत ज्यादा गिल्ट दे देते हैं कि बिकॉज उनको अपनी बात मनवानी होती है कि तू ये नहीं करेगा, मैं ये करूंगी. दे अवेयरनेस, माइंडफुलनेस समवेयर, Which is okay. You know, हाँ, I mean, I mean, yeah. you have to give them that कि वो जो भी जनरेशन से है, वो जो भी कर रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से कर रहे हैं. We don't have to blame them at the Correct. end of the day. But I was the, मतलब But you wanted to मैं do वो something चीज़ for yourself. फर्स्ट हैंड झेल रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि what is I am feeling. It is making me more difficult, no, to Yeah. leave. मैं कैसे छोड़ के जाऊँ अगर ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ऐसी नन्ही ब्लैकमेलिंग आ रही है मेरे आगे. And I'm like, dude, how it is making me difficult. Now you're making my life difficult over here. मैं जा रहा हूँ अभी 2 महीने में. So I had to take strong steps. I had to. She was weeping. She was crying. कि नहीं, तू नहीं जाएगा. मैं, I will do this. I will do that. And I was like, mummy, sorry to say, but मैं जाना ही पड़ेगा. I'm so sorry. I love you so much. मैं मिलता रहूँगा आपसे. I will keep coming home. I will, come home and eat food, eat lunch, dinner with you, everything we will do. But just मेरी space जो है वो different होने वाली है शादी के बाद. It is going to be difficult, but I want to take this a challenge.
So help me, support me in this. But little did she know that she was not able to support me. In no way did it mean that you are going to stop taking care or stop loving your mom. Yeah. It just meant that I love you Yeah. and I want to keep you happy, but I want to also keep my wife happy. Yeah. And I'm choosing both of y'all without that entire scenario where there is a tug of war happening between you and your between me and your mom about you. You wanted to sort of avoid that. Yeah. Yeah. And I had already thought all the scenarios. जब अगर मेरी वाइफ आएगी वो घर पे तो क्या सिनेरियो होंगे, मैंने विजुअल में दिमाग में प्ले कर लिया था उसको ऑलरेडी कि माय सिस्टर इज देयर, माय मदर इज देयर एंड नाउ बिसू. 3 women. Imagine the kind of chaos these people will bring to the table, not intentionally but कोई किसी से Unintentionally, of जमता course. नहीं है. You know, when you start living 24/7 your real side comes in and then you want to, you know, कितना भी आप प्राइवेसी बोल लो, देर वो प्राइवेसी आड़े आती ही है आपके. And then it starts to get to you that कि listen, you know, and then वो अगली साइड नहीं जाना था मुझे अगली साइड दिख चुका था कि मैं यहाँ पे एंड मॉम को कुछ प्रॉब्लम है किसी से तो मॉम मुझे बात कर रही है. इफ यू सपोज हैव अ प्रॉब्लम देन यू आर टॉकिंग टू मी बिकॉज यू नो यू वांट टू क्लियर इट आउट, यू वांट टू कम्युनिकेट. अगेन सिस्टर इज डूइंग दैट द सेम. तो 3 लोग एक बंदा पिस रहा है बीच में, प्रेशर हो रहा है उसको कि वो किसका साइड ले, बिकॉज वो तीनों से प्यार कर रहा है. Correct. तीनों दुश्मन नहीं है उसके, यू नो, बट जमा के नहीं, देयर इज नो थिंग दैट कि तीनों के साथ जमा के रखना, बैलेंस नहीं होता. Either you live alone or either you live with them and go through whatever shit you want to go through with. So I had this phenomena that मैं शादी करूँगा तो मैं शादी करके next day I want to live at a different place altogether with my wife and I will keep coming whenever I want to. This is also my house, that is also my house. So where did this awareness come from? Because for men usually it's very difficult to leave their house after marriage because it's been done since generations now, right? Since generation you are living with your mom and family and मतलब ये तो हमने हर जगह देखी है. Yeah. मोस्ट ऑफ द जगह देखी है कि बहू आती है, सास के कुछ और एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहू के कुछ और एक्सपेक्टेशंस होते हैं. दोनों अपने अपने जगह सही होते हैं पर फिर भी क्लैश होती है बिकॉज दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है, दोनों की लाइफ अलग है, Beliefs अलग है, बिलीव्स baggage अलग है, बैगेज अलग है, सब कुछ अलग है एंड इसमें हस्बैंड बीच में पिसता जा रहा है. Yeah. But you ensured that शादी किया, next day I am with Bissu in a new house and there is not one night that I spent in your house apart from the nights that I used to come over and stay like with your family. Yeah. But उसके अलावा शादी के बाद officially I have never have had a sleepover in your house. Yeah. How did that awareness come from? ये कहाँ से आया तेरे को कि oh wow मुझे तो पता है मुझे क्या करना है. I think I'm very thankful for the God to give me this awareness because जो मैंने बचपन से we used to live in Chaul and then after like 25 years of living in Chaul I used to see all the environment कि मियाँ बीवी में बहुत झगड़े हो रहे हैं, there is fighting happening, physically fighting happening, mental fight happening, physical abuse हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं यार. So ये सब बचपन से ही ये सब देखा है और आई हैव नॉट सीन अ हैप्पी कपल का एग्जाम्पल. मैंने जो भी मेरे बचपन से अभी तक का एग्जाम्पल्स देखा है कि हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं और वेरी नेक्स्ट डे या फिर फर्स्ट 3 days में दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड दे अब्यूज ईच अदर. या तो हाथों से मारते हैं या तो मेंटली मारते हैं या तो वर्ड से मारते हैं. दिस इज ऑल आई हैव सीन. सो आई वाज लाइक ये मेरी लाइफ नहीं होनी चाहिए भाई, इनके एनवायरनमेंट में मेरी लाइफ नहीं होनी चाहिए जिसको ताना मार रहे हैं. वर्ड्स एक्ट्स लाइक अ स्वॉर्ड. तो वो जली कटी अगर मेरी बीवी को किसने सुना दिया या मेरी बीवी के सामने मुझे किसी ने सुना दिया या मेरे सामने मेरी बीवी को सुना दिया, आई कैन नॉट टेक दैट. सो आई नीड टू फर्स्ट मेक द एनवायरनमेंट राइट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फ्यूचर वाइफ. तो वो मैंने सोच लिया था कि ये मैं करूंगा आगे. एंड फॉर योर मॉम ऑल्सो बिकॉज यू नो कि अगर सपोज हम साथ में रहते एंड योर मॉम एंड आई you knew about it that all 3 of us are very different personalities. I come from a very different background, your mom comes from a very different background and even you come
like your upbringing is very different. Your upbringing is also very different. Your personality is also very different than your mom. Yeah. You know, when I see both of y'all, you guys are also very different. Yeah. So when you could picturize that, okay, these three and plus your sister are gonna live in one house, it would have been आर्या पार होता. हाँ. You know. और मुझे वहाँ जाना नहीं था, Yeah. क्योंकि आर्या पार सोच के आप नहीं चल रहे हो. इंस्टेड ऑफ कि आप अलग हो जाओ, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन. यहाँ पे पहले हार्डशिप झेल लो, जितना आपको मनाना है अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, वो मना के हो गया आपका, देन द इजीएस्ट पाथ स्टार्ट्स. I think your sister was very supportive. She is very chill. Yeah, you know she's her. very She's chill. very chill. Yeah. Prerna. Yeah. Yeah. She Your wouldn't mom was have- just scared, I guess, earlier. I was scared Hmm. कि मुझे साथ में नहीं रहना है इनके साथ. ये तीनों लोग, they cannot fit in one house. Yeah. So it's a chaos. It's a madness. अगर हो जाती, अगर वो हम आते कर रहते तो instead of doing that, पहले ही सोच लो, पहले ही प्लान कर लो. और बिकॉज एज आई टोल्ड यू, बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, तो फिर वो एग्जाम्पल सेट करना ही नहीं था मुझे. I think a lot of people stuck in the loop of, 6 महीना निकाल के देखते हैं फैमिली के साथ. I mean, in our family we have examples, a lot of people Yeah. we've seen. कि 6 महीना निकाल के देखते हैं, बट Yeah. वो 6 महीने में इतना घमासान हो जाता है दैट पीपल देन आर लाइक कि नहीं, और 6 महीना निकालते हैं, और Yeah. 6 महीने के बाद बच्चा हो जाता है, बच्चे के बाद बोलते हैं अब कैसे अब कैसे मूव करे, बिकॉज अब तो बच्चा हो गया, अब तो फैमिली चाहिए संभालने के लिए. Yeah, and then it's a trap. एंड देन इट्स अ लूप. It's a loop that you are that stuck आप फंसते जाते हो, आपको बाहर निकलना है, वो लड़की बेचारी पिसती जाती है. उसको टाइम से निकलना था, वो बेचारे अपने हस्बैंड को बोल के थक गई कि मुझे निकलना है. वो हस्बैड बेचारा पिस रहा हुआ है अपनी माँ के बीच में और अपनी बीवी के बीच में. फिर So काम that का loop स्ट्रेस. is going on. Everyone is suffering. It's not just one person is suffering. Everyone is suffering. Hmm. So That becomes too chaotic when Yeah. you are not choosing Yeah. happiness or peace over the chaos that got created because you chose to live together. But a lot of families actually live happily also together. there are You a know, lot of there are examples. a lot of examples that do actually live very happily. Yeah. But it was not the case for us because we knew where it would lead. Yeah. We realized that beforehand. Yeah, we read the room. We read the पहले से ही. Yes. Yeah. Because also there were examples within the family, like your bhaiya bhabhi, right? They've had a difficult time with settling with, like, in the family with the in-laws, and then there was a lot of ugly side to the relationship which you clearly wanted to avoid, and even your bhaiya bhabhi were very supportive enough for us also to take that stand and to understand life. Yeah, उनसे हमको कितना सीखने मिला, उनके एक्सपीरियंस से हमको कितना सीखने मिला. Absolutely. कि there were like sides taken, कि Yeah. it's humiliating, it's embarrassing. एक चीज़ है जो ना मुझे बहुत खटकती है बात, ओके, एंड ये मैंने मेरे से ही नहीं, मैंने बहुत सारी लड़कियों से सुना है, बहुत सारी मैरिड वुमेन से सुना है ये चीज़, कि जब इन लॉज बोलते हैं ना कि अरे ये तो मेरी बेटी जैसी है. आई नो व्हेन दे से इट इन अ वेरी कैजुअल, नॉट इंटेंशनल, Societal अनकॉन्शियस सोसाइटियल मैनर. ये तो बोला जाता है ना, हाँ. ये तो बोलने के लिए बोला जाता है, ये तो मेरी बेटी जैसी है. Copy paste. But I also feel that why बेटी जैसी है, why बेटी नहीं है. हाँ. It's not about me also, because I've seen so many stories as such. Your mom has not told me any of it, but I'm aware कि ऐसा होता है society में काफी. And when this is said, it feels like I respect you the same way that I respect my mom. I treat you that Devesh's mom. That means that I have certain a lot of respect for you as a person. But then why बेटी जैसी, you know, when this, ये जब कब affect होता है पता है, when you are sitting in a gathering, family gathering, and वहाँ पे अगर अपनी लैंग्वेज में, लाइक फॉर एग्जांपल सिंधी में बात किया जा रहा है, एंड वो बहू को कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज तुम सेम लैंग्वेज के नहीं हो, तुम Yeah. अलग हो. Yeah. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील लाइक एन आउटसाइडर. Yeah. You feel like, oh, you don't belong here, or you sometimes feel like, oh, they did not accept me yet. Yeah. They don't consider me as a part of your Yeah. family. Until they translate the same thing and tell you, then you feel like, okay, I am considered one of them. Yeah, but like, why translate? Why It's can't we maybe- use a common language? Maybe I'll tell you why. Because it's a generic settings. कि अगर चार सिंधी लोग बात कर रहे हैं और 2 बंगाली है, you know, just taking an example, hypothetical scenario,
तो वो सिंधियों में ना वो निकल Easy हो जाता है, जाता वो लैंग्वेज की सेटिंग्स है, डिफॉल्ट सेटिंग है उनके बीच में, तो शायद देन दे रियलाइज ओ वी हैव समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड सिंधी. But can you understand the problem here? You're realizing that there is someone. हाँ It's not Correct. consciously done. कॉन्शियसली नहीं होता वो, You ऑफ know, कोर्स. consciously awareness आना भी अच्छी चीज है, of course अच्छी चीज है. या But I think somewhere if you but if they didn't try to reverse it also, no, कि now they are trying to explain what they just yeah. discussed Hmm. in Hindi. Yeah. If that happens, then it's still like halfway met. हाँ कि चलो ठीक है, मेरी लाज रख ली तुमने and I'm good now. Yeah. Okay, at least you're making me part of your group. Feel like saying thank you, but okay. मेहरबानी हाँ, मेहरबानी, एहसान है, एहसान किया तुमने. Thank you, thank you. हाँ, इसकी जरूरत थी लेकिन हाँ. Okay, but Devesh, Yeah. you have some controversial story for us. Okay. मतलब तू मेरे से उगलवा के ही ले रही See, है. guys, we are here for content. We need some masala now. हाँ, Okay. मसाला. What was it, Devesh? What is the exact conversation that तेरा you खाना had? हजम नहीं होगा ना अगर तू ये नहीं that you had. सुनेगी. आज सारे पोल खुलाऊंगी मैं. That you had with your mom. Okay. I don't know, probably I should say this or not. Yeah, out loud. I think it's just too funny, and I think if your mom looks at this episode, watches this episode, हंसेगी because वो. I'm sure she will. हंसेगी She's वो. going to laugh on it. और मेरे को बोलेगी कि वो सिंधी में comment करेगी. सिंधी में मुआ ये बोलने की बातें होती है क्या, एक घर में बात रखना बाहर क्यों ले जा रहा है ये सब. Something needs to be kept between us. Yeah. But I'll say it, it's okay. It's just a very funny conversation that कि उनको कन्विंस करने के दौरान जब हमारी बात चल रही थी, तू मैं बहुत चल रही थी, वो कुछ बोल रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ. To set the context, Devesh's mom had reached a point where she was making illogical, Yeah. what do you say, illogical statements. Statements. कि मैं मर जाऊंगी तू चला गया तो, या मैं खाना खाना छोड़ दूंगी, दवाई लेना छोड़ दूंगी. So तला all हुआ of खाना these were चालू कर coming. दूंगी. So what did Devesh do? He came to her level. हाँ. Okay. जैसे को Logic तैसा. left the chat. लॉजिक लेफ्ट द चैट. मैंने भी बोला अब इंसान को अगर मुझे इससे डील करना है तो इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा. तो आई वाज लाइक मम्मी व्हाट इफ मुझे घर पे नंगा घूमना है तो मैं जॉइंट फैमिली में कैसे घूमूं. तो मम्मी क्योंकि तू शेर है. वो सवा शेर है भाई, है ना. वो बोलती है अपने रूम में बैठ कर नंगा घूम, बंद कर दरवाजा, मुझे क्या करना है, बट रह साथ में. आई वाज लाइक मुझे हॉल रूम में नंगा घूमना है, पर्दे खोल के पड़ोसियों को बताना है मेरा घर है, मैं नंगा घूम सकता हूँ. इट इज माय, It's not allowed. It's just not. saying he's just joking. मैं मेरा पॉइंट प्रूव करवा रहा हूँ. वो अपनी 25 पॉइंट प्रूव करा रही है मेरे सामने. नन ऑफ देम मेक सेंस. आई हैड टू प्रूव वन पॉइंट की विच लाइक अब ले मुंह तोड़ जवाब. अब हाँ, बता अब इस पे क्या बोलेगी. अब इस पे क्या बोलेगी. I'm sure she must have had. चुप हो गई. Oh. चुप होके बोलती है जाने दे हट, तेरे से तो बात ही करना बेकार है. How did she do? How did she do? जाने दे हट, तेरे से तो बात ही करना बेकार है, बेशरम आदमी. We chose another reason that we chose living separately was that we wanted to emotionally, consciously make space for us. We wanted to have our own space where we can be ourselves completely, like 100% we can be ourselves. Yeah. We don't have to think about mom क्या सोच रही है, Yeah. बहन क्या सोच रही है, पड़ोसी क्या सोच रहे हैं. प्लस ऑल्सो इट्स लिमिट्स अस द स्पेस कि अगर हम कुछ भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं या आर्ग्यूमेंट हो गई हम दोनों के बीच में, Yeah. तो हम वो रूम में बैठ के कर रहे हैं. हमको अगर व्हाट इफ पूरे घर में बैठ के करनी है, आई डोंट लाइक द स्पेस देयर, आई लाइक द हॉल रूम, आई वांट टू डिस्कस फ्रीली विद यू. एक सेफ स्पेस बनानी है. हाँ. तो वो प्राइवेसी पे भी बात आ जाती है कि मैं एक रूम जो भी मुझे करना है तो वो रूम में होगी. अगर तुझे किचन में कुछ बोलना है मुझे तो यू कांट से एनीथिंग. अगर तुझे हॉल रूम में बोलना है यू कांट से एनीथिंग टू मी. ऑफ कोर्स यू कैन से. सो वो लिमिट क्यों करना है ना वो चीज़ों को. अब पूरा घर है तो पूरे घर में भी बोल सकते हैं. हाँ, मतलब ऐसा है कि when you are with your family, you also think twice before raising your voice also, right? हाँ. अब झगड़ा आ रही है जोर से. Yeah. तो मैं क्या करूँ उस चीज का. Yeah. आ रही है तो मुझे तो निकालना पड़ेगा ना. मैंने तेरे को बोला था ना ये टाइम पे बात नहीं करना. मम्मी के सामने तेरे को बात निकालनी होती है. हाँ, तू चाहती है मैं झगड़ा करूं, मतलब तू चाहती है कलेशी औरत. दिस कन्वर्सेशन स्टार्ट्स अपीयरिंग इन लाइक नेचुरली निकल के आती है कि या तो पत्नी भड़क रही है पति पे या पति भड़क रहा है पत्नी पे, एंड द एनवायरनमेंट गेट्स स्पॉइल्ड. और माँ सुन रही कि ये वेयर द फक इज दिस कमिंग फ्रॉम. Yeah.
Sometimes this also happens when you're living in a very joint family, when you're living with your in-laws or your parents. झगड़ा भी ना schedule करके करते हो कि हाँ। अभी मम्मी आ गई है घर पे तो अभी शांत हो जाते हैं, बाद में करते। सप्रेसिंग। हाँ, तो बट वो बाद में करते हैं ना, समटाइम्स इट ब्रशेस, मतलब वो ब्रश इट अंडर द कार्पेट भी हो जाता है सप्रेस हो sometimes। जाता है ना। हाँ। तब तक इंसान भूल भी जाता है। हाँ। इतनी सारी चीजें हो चुकी होती है, घर के लिए खाना बनाओ, मेहमान आ रहे हैं, Correct. गेस्ट आ रहे हैं, घर पे और भी लोग हैं, उनका देखभाल करो, इतनी सारी एक्टिविटीज है। Correct. इन सब में वो जो मेन बात है वो दिमाग से निकल जाती है एंड वो रह जाती है फिर। और वो सप्रेस होती रहती है कि वो कुड़ती रहती है बेचारी वो लड़की या और इवन द जो भी मैन, राइट, लड़का। उसके दिमाग, उसके अंदर भी चलता ही रहेगा, Yeah, चलता ही रहेगा, yeah. एंड वो कभी एड्रेस ही नहीं होगा बिकॉज ओ सही टाइम नहीं है अब सही time एड्रेस है। करने का। Yeah. ओहो, अब तो मतलब आज शाम को मेहमान आ रहे, कल सुबह को तो हमको मंदिर जाना है या Yeah. कहीं पे भी जाना है, Yeah. डॉक्टर के पास जाना है। सो देन इट कीप्स ऑन पाइलिंग अप एंड सम डे इट देन जस्ट ब्लास्ट And हो उसकी जाता है। वजह से पाइल अप होने की वजह से एक पति और पत्नी के बीच में जो एक स्वीट रिलेशनशिप है, जो क्यूट इंटीमेसी है, वो रह जाती है बिकॉज उनको पता है, मन में ये बात चल रही है कि बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड, आई विल नॉट बिहेव करेक्टली विथ यू। You're not yourself. You know, I'm not myself. Then how I used to be with you, I can't be with myself. Yeah. I can't be with you then. अगर तू मुझे स्माइल कर रही है तो मैं स्माइल बैक नहीं कर रहा हूँ तुझे। ये दिखने आ जाता है एटीट्यूड में, यू नो, चेहरे में, So you want to बॉडी have लैंग्वेज ही your चेंज हो जाती है। And also coming from the fact that you and me are completely different personalities. I have anxious attachment styles wherein I would want to talk to you, I would want to be with you. I have certain way of talking, I have certain way of, you know, discussing problems. Yeah. Sometimes my pitch goes high, sometimes I'm just crying, and which is healthy, right? I mean, you can cry in certain scenarios, and you are very different. You want to sometimes take up space, even if you want to just say something out loud. Imagine including family in this dynamics. It's a lot. या अननेसेसरी उनका टेक आता है। हमारे बीच की कोई बात है जो हमको रिजॉल्व करनी चाहिए, थर्ड पर्सन कम्स इन, सेज समथिंग वेयर इट डज नॉट सिट वेल विद अस, द इम्पैक्ट दैट क्रिएट्स कि द थर्ड पर्सन कम्स इन यार। Yeah. वो And थर्ड पर्सन की you जरूरत won't नहीं है want फिलहाल, that. क्योंकि हाँ. मियाँ बीवी बात है, मियाँ बीवी में सॉर्ट होनी चाहिए Correct. कि तेरे को मुझसे कुछ गिला है, मेरे को तेरे से कुछ गिला है, लेट्स सॉर्ट इट आउट बिटवीन अस। एंड एक रूम में हुई और उसके बाद इन द आउट फ्रंट we should be supportive with each other. Yeah. But जब हम दोनों हैं तो then we can talk about it, what are the differences यार। There must be a different take on it also. Sometimes when there is an elderly figure in the house, the peace is also sometimes maintained. Yeah, The it is. decorum is also sometimes maintained. But we chose that we want to explore our patterns, our emotions, our everything as individuals together and without the interference of any family member. Yeah. Because what we've observed with our families are very dysfunctional way of talking, dysfunctional way of healing, dysfunctional way of being. Yeah, you tell me किसकी फैमिली डिसफंक्शनल नहीं है आज की तारीख में? को एक ना एक तो पॉइंट निकलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई फैमिली डिसफंक्शनल नहीं है। Yeah, absolutely. एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ तो होता ही है सबकी कुछ ना फैमिली कुछ में. निकलेगा ही। आप कितना भी ऊपर ही बोल लो, लाइक यू वर, यू नो, Yeah, थॉट दैट till I got married, I thought, oh my god, my family is so perfect. Yeah. I love my family. हम साथ साथ हैं, ABCDEFGHY Yeah, fully. JKLM। Fully. There was this heart glasses that I was wearing. Yeah. And everything just got shattered once I got married and got into therapy. And I was like, oh, why am I like this? And then I was like, oh my god, my family is like this. And that's why I'm like this. Oh my, what's happening? This is, एक second, my whole life was a lie. Yeah, it What was just happened? So I was taken aback. पर्दा Copyright. But yeah, so and then I started to understand why do I fight with like the way I do, because I understood that my family was not so perfect, my childhood was not so perfect. I thought that my childhood was amazing and I had the best childhood, but when I look back now today I realize there were a lot of holes and Yeah. there were a lot of, and obviously they did the best that they could They are perfect in their own in way. their own way, and if they would have not been who they are, I would have not been The here way you are the right way now. I am right Yes, now. absolutely. So we have to address that. So thanks to also. them Thanks for to giving them us for- yeah. that realization. So another reason why we wanted to actually live separately
was that we wanted to build our own routine, our own clock. You know, when we are living with uh, parents or Yeah. in-laws, there's a certain schedule that they already follow, and you will have to follow the same thing. You automatically fall into that category. Oh my god, मम्मी पापा अभी सो रहे हैं तो चलो हम भी सो जाते हैं, मम्मी पापा उठ चुके हैं हाँ हम भी उठ जाते हैं, हाँ you know. But we wanted to have that freedom of choice of when should we do what. And also I feel a big part of you wanted to explore how to build a house. explore the unknown. How to build, like how to do chores, like Yeah. for because most men are also not used to doing Yeah. घर का काम. ये भी सदियों से चलता आ रहा है कि घर का काम तो औरतें ही करती है ना, they only do it, मतलब ये तो नॉर्मल है ना for a lot of people. Yeah. But you wanted to choose differently. Yeah. I saw जब मैं अपने मम्मी के साथ या फैमिली में रह रहा हूँ, किचन में जाने नहीं दिया जाता था. अगर मुझे कुछ इंटरेस्ट है, लाइक आई वांट टू मे बी से कुक समथिंग ऑफ माय ओन, आई हैव सीन अ रेसिपी एंड आई वांट टू टेस्ट दैट some unconventional recipe which is not some traditional recipe or something, कुछ अलग हटके, लाइक अवन में कुछ बेक करना है, माइक्रोवेव में मुझे कुछ पुडिंग बनानी है सपोज, तो दैट यूज टू बी लाइक मुझे दे दे मैं बना देती हूँ. इट्स अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग. मम्मी लोग का इतने सालों से वो किचन रहता है, उनकी स्पेस है वो. इट्स समथिंग दैट कि हमको इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया उन्होंने सदियों से हमको, बचपन से. बट व्हेन यू ग्रो, when you know you're getting married, you want to take up some responsibilities because तुमको पता है तुम अभी अकेले रहने वाले हो, तो तुमको वो चीज़ तो आनी चाहिए, वो बेसिक होनी चाहिए. जैसे किचन में कुछ बनाना, बेसिक बनाना, दाल चावल रोटी सब्जी टाइप बनाने आना. And also you wanted to try stuff, I right? wanted to try. You मेरे को wanted to खुद को चुलती you अंदर से. हाँ, खुद को चुलती कि मेरे को Yeah. कुछ बनाना है, मुझे चाय बनाना पसंद है, या मुझे Yeah, I want to cut chopping vegetables. हाँ करना पसंद है. Yeah. But somewhere moms are because moms have been doing it Yeah. since years, and they have a certain way of doing things, territorial Yeah, about yeah. the space, and which rightly so because they're doing it since ages now. Yeah. But if a child wants to do it, women are accepted easily कि हाँ हाँ बेटा तू ही कर ले सब कुछ करके ऐसा. But men are sometimes not given that leeway. बिकॉज उन्होंने भी, उनके अंदर भी इनबिल्ट है ना कि ऐसे ही होता आया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल माई डैड ऑल्सो डिडंट एवर एंटर द किचन. He is a man of course, and also the youngest of all siblings. तो was never किचन से इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ. So that was really difficult for my mom. And I've seen this growing up that plate खा के भी हो गया है तो मॉम लेके जा रही किचन में. But plate is, it's like a plate तो उठा ही सकते हो. So just the fact that ये सदियों से चलता है, and that change needed to happen कि हम share the load करें, हम share करें load को. Which is why you wanted to. Which is why And I was also very specific that I would want someone, a man, who shares the load with me. I don't want to do everything myself because I'm a different person. Between us, I knew You knew it what already. I'm getting into in our marriage. So I will take up that responsibility happily because मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है. I like doing that. किचन में तेरे लिए breakfast prepare करना. दीदी अगर बना के गई तो I'll serve you that breakfast. I'll put coffee on your table, hot water in the morning. I do the clothes. Laundry, तो मैं yeah. laundry कर लेता हूँ. मैं I like- ग्रोसरीज ऑर्डर कर लेता हूँ. Yeah. आई लुक अप कि दाल कौन सी लगेगी, दाल कौन सी आनी चाहिए घर पे, दाल ख़त्म हो गई है या फिर ग्रोसरीज ख़त्म हो गई तो उनको रिफ़िल करना. सो ये पूरा राशन पानी का जिम्मा मैंने ले लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है. We call Dinesh the kitchen king. इन किचन गाय. Kitchen guy. King is too much. I like the kitchen guy. I'm the Humble, kitchen humble. guy. Yeah, Humble. humble, please. Adding to this, we also wanted to build, जैसे कि हर फैमिली में ना एक तरीके की पूजा होती है. हर फैमिली में एक तरीके का रिचुअल होता है जो फॉलो होता है. We wanted to do that our way. जैसे हमने अपनी शादी की, हमने शादी में बिठाया पंडित जी बैठिए. Pandit ji was also pretty cool. He was very chill. lovable. Yeah, मतलब he very was chill. lovely. उसको हमने बोला पंडित जी ये शादी नॉर्मली कितने टाइम चलती है? He said 4-5 घंटा बेटा तो चलती है. बोला 2 घंटे में खत्म करो.
पंडित जी वाज लाइक ठीक है मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा. पंडित जी 2 घंटे में खत्म करो, रफा दफा करो, सारे मंत्र एक ही टाइम पे बोल डालो, हमको समझाने की भी जरूरत नहीं है, वी अंडरस्टैंड योर इमोशन, Yeah, जस्ट गेट इट you डन. understand us, we understand you, and Yeah. खत्म करते हो. शादी खत्म करो. Our most important point was also that हमारे तरीके से शादी हो, Yeah. हमारे रिचुअल हो, हमारी चीजें हो. Also because you are a Sindhi and I am a Bengali Plus slash Malayali. plus Malayali. Yeah. So उस सिचुएशन में हमने शादी जो की थी हमने वो normal नॉर्मल तरीके आर्य से समाज की की थी. आर्य जो समाज. we did not even do a Sindhi wedding, we did not do Bengali or a Malayalam wedding. Yeah, we did some rituals जो जो ये Sindhi, जैसे हाँ, तेल थोड़ा बुकी बहुत. होती है, we did Yeah. and you तुमने मेरे कपड़े फाड़े, you know all that. फिर मुझे तुम्हारा- फाड़ने थे नहीं पर मैंने मेरे हाथ साफ कर लिया. हाँ, because obviously हलाल हो रहा है बकलावा. बकलावा नहीं, हलाल हो रहा है बकरा तो क्यों नहीं. एंड ऑल्सो मतलब द होल पॉइंट कि मुझे मेरे हिसाब से करना था ना. मुझे Yeah. कोई नहीं बोल सकता कि ए तू कपड़े नहीं फाड़ सकती. अरे पर मुझे फाड़ना है. प्लस मेहंदी What do you mean? इतनी मुझे लगानी इतनी है, मेहंदी लगानी है, इतनी नहीं लगानी. What do you mean? मेरी शादी है, मैं हाँ. कुछ भी कर सकती हूँ मेरी 28 शादी तक में. मेहंदी लगाने बोल रहा था तुझे कोई. कौन देने वाला है. I love it that see I understand where moms and everyone family members are coming from. Mom was like कि देख इतना तो लगाना पड़ेगा. मेरी दिल की इच्छा है मेरी बेटी की शादी. अरे पर मुझे नहीं लगाना है. What do you? मेरी शादी है मतलब तू लगा. You do it. I am happy for you. You do it. Yeah. So my point was that मुझे नहीं कर. It's my day. Yeah. I want to be happy and I want to enjoy and live that And that day. resulted in the most happiest wedding that I've Happiest day. seen. मेरी of- खुद की wedding इतनी अच्छी गई है. Yeah. जो 2 दिन I felt like what Vacation. It felt like vacation to us. Yeah. But yeah, so coming back to the reasons, one of the reason is also that we have an unconventional career Very much. since like the past two and a half 2.5 years. yeah. We don't have a 9 to 5 job, and usually when you live with your parents or your in-laws, it becomes quite difficult to make them understand your career or your schedules, because when you are in content creation, it becomes really the schedule is not what I mean there is no traditional schedule Yeah. that you are following. रात को 11 बजे भी स्क्रिप्ट लॉक हो रही है, 2 बजे तक हम शूट कर रहे हैं, ब्रांड्स को Yeah. फॉलो अप ले रहे हैं, पीपल आर अवेक एट दैट साइड ऑफ द पार्टी एंड वी आर आल्सो अवेक. सो इसमें So there is अगर no- फैमिली स्ट्रक्चर होगा Yeah. तो It becomes really difficult for you to help them understand कि ये उनको भी क्यों हो डिस्टर्ब रहा हम है. कर रहे हैं, उनकी स्लीप शेड्यूल खराब कर रहे हैं. हमारी तो हो ही रही है बिकॉज हमारा अनकन्वेंशनल है. दिस इज व्हाट वी चोज फॉर अस, Yeah. बट वी डिडंट चोज फॉर देम. We didn't choose for them. Yeah. Most of the people in our country didn't even know or acknowledge, until date they don't acknowledge content creation as a career. Yeah. It is a full blown career, guys. I mean there are money in the industry which is being put in this career, and people don't realize that they don't क्या बोलते हैं acknowledge ही नहीं हो पाता कि ये career है करके, you know, so that you get that Something a your lot. mom said, no, few My days mom, ago. my mom, it was very cute of her. She was like, so my mom sort of told my sister that विशाखा करती क्या है? करती क्या है? हाँ, तो वीडियो my तो ठीक sister है. was like, my sister was like कि हाँ जो कर रही है कंटेंट क्रिएशन तो बिजनेस क्या हुआ? Okay. पर यही तो बिजनेस है कंटेंट क्रिएशन. पर ये तो शौक के लिए कर रही है ना वो. So it was so innocent that Yeah. obviously they don't know what is this Yeah. about, because this is completely different from what used to happen in their generation. Yeah. And till date, like ये जो boom देखा है हमने content creation में, it also happened after COVID, Yeah. which COVID- happened. COVID So wave. for us it was new. For them तो it must be like ये क्या हो भी क्या रहा है. Yeah. So How are people making so much money in content creation? Like ये वीडियो बनाते, वीडियो डालते और पैसा कमा लेते हैं लोग. Yeah. इतना easy है इनके लिए. yeah, nobody knows the work Nobody that knows goes behind it's not it. easy. It's of like course. you're doing what? You're doing You're doing scripting, 5-6 people's job, scripting, you're doing screenplay, you're doing shooting, you're editing, editing, you're posting, taking it live, marketing. you're marketing, so much. You're directing also. Yeah. So much job. Yeah, it's not easy. It's not Yeah. as easy as it looks Yeah. like from the Yeah. outside. But also, and plus like not having good schedules.
because you just expect, you're always on, you're always like अच्छा ये करना है मुझे, ये करना है मुझे, ये shoot करना है मुझे, ये trend करना है मुझे, वो करना है. And to explain that to your parents or to your in-laws when you are living in the same house कि ये लोग सो रहे हैं पर उस रूम में वो शूट कर रहे हैं. Yeah. It's just, और या हमको बाहर जाना पड़ रहा है शूट के लिए और हम 4 बजे वापस आ रहे हैं. How do you explain that to your parents? Yeah. How would they probably they after a point of time they do understand it, but there are sometimes unintentional judgments also. कि अरे guilt also कि अरे यार क्या तुम्हारा तो क्या ही हो रहा है या जो भी. 4 बजे घर पे आ रहे हो, घर पे क्या आ रहे हो. कहेंगे? So we somewhere didn't want anything of that sort in our life. We wanted to focus on our career also. Yeah. We wanted to focus on us also, but we also wanted to have our space to say, for example, shoots and do the work, and also at the same time respect our parents' schedule also, because when we are living in the house, Yeah, they need हमारे proper वजह care. से हाँ हमारे वजह से वो भी सारे उल्टे सीधे हो जाते हैं. या और मम्मियों का ऐसा होता है, इमोशनल होती है कि जब तक बेटा बेटी घर नहीं आएंगे तो खाना नहीं खाएंगे. Yeah. तो वो But- क्यों झेले ना, वो दे शुड ईट ऑन टाइम. सो हाँ. इसीलिए अलग ही रहो ताकि देयर स्केड्यूल इज बैलेंस्ड एंड And नॉर्मल yours is एंड also ours is yeah. managed Correct. however we are managing. एक और चीज जो काफी ज्यादा आती है with family, and one of the reasons that we didn't want to stay with parents or in-laws was that constant pressure of लोग क्या कहेंगे. Oh तुमने ये man, डिसीजन ले लिया, लोग क्या कहेंगे इस the बारे में. favorite line. तुम बच्चा नहीं कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे. Because when you're not just you and me, when you have parents, and moms also go out, they sit with their set of friends and they enjoy their time, and obviously you sort of share क्या situation है. Then they possibly come home and then they are like कि सुनीता तो ये बोल रही थी पता है, सुनीता की बहू को तो बच्चा हो गया. It just happens. Yeah. And that can be a trigger point for someone. Say for example, if someone speaks to me about when are you having kids, I don't like it because that's none of your concern. My point being that this also constant pressure of log kya kahenge affects your life. It affects how you think, how you work, how you to the point that you let it affect you. Obviously there are ways to just block out the noise also, but it just adds unnecessary drama to your lives. Yeah, it does. And दूसरे की स्टोरी ना वो बिलीव करने लगते हैं कई बार पेरेंट्स yeah, कि दिस हैज हैपेंड फॉर देम, व्हाई आरंट वी डूइंग इन आवर. because वो तो नॉर्मल है ना. अगर That is उनके घर पे normal. होगा तो वो तो नॉर्मल है. तो हाँ. हमारे घर पे भी होना चाहिए ना. शर्मा जी के बेटे ने इतना परसेंटेज लाया हाँ. तो तुमने क्यों तो नहीं आपका लाया. क्यों नहीं? ये बचपन से ही होता आ रहा है तेरे और मेरे घर पे. Yeah. I mean most of the homes. But nobody realizes that every kid is different. Yeah. I personally know people who have scored 98 percentage and are doing different things in life. Yeah. Whereas I have scored 60, 70. 45. That's it. And we are doing something else in our life. So Yeah. grades is not necessarily only one thing that defines what you're going to do in your life. Yeah. Ultimately what results into what you're going to do with your life. तूने MBA किया है, मैंने नहीं किया, पर तूने शादी मुझसे की ना. Yes. I had to just say this. Still I got the trophy. Yeah. Which trophy? Huh? Me? Huh? Oh, then okay. So, point being that there's also pressure of being the good bahu. Ah. You know? एक तो सुनीता पता नहीं बड़ा एग्जाम्पल आ रहा है मेरे पास. कोई सुनीता है ही नहीं मेरी जिंदगी में. बट सुनीता की बहू ने ना इतना सुनीता की बहू ना उसकी मॉम को रोज शाम को चाय बना के देती है. अरे पर मुझे नहीं देना है, ये क्या बात हो गई. द अनसेट प्रेशर, दे डोंट इवन मीन इट, इट हैपेंस अनइंटेंशनली, बट एंड अ लॉट ऑफ इट इज एक्सटर्नल, नॉट इवन पेरेंट्स का उनका खुद का थॉट. इट्स जस्ट एक्सटर्नल थॉट. When that happens, it comes as a pressure for you to be the good bahu. If I don't do even one thing, I'll keep on feeling guilty that oh my god, मेरे से ये नहीं हुआ, अब मैं शायद अच्छी बहू नहीं हूँ. हाँ, मतलब कपड़े भी उनके हिसाब से पहनने हैं, बाहर जा रहे तो A lot of family गेस्ट have. आ रहे तो पल्लू ढका हुआ होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट यू शुड हैव इंडियन ड्रेस, एवरीथिंग इज कवर्ड. यू कांट हैव लाइक शॉर्ट टॉप्स और क्रॉप टॉप्स और काइंड ऑफ थिंग्स or jeans like. But I've shorts. seen this also in a lot of homes. When there is
bahu, Yeah. and when there is a girl, Like उनकी as खुद in की the बेटी. sister, उनकी खुद की खुद की बेटी, yeah. treatment for the sister and the bahu is completely different. Whereas you say कि मेरी बेटी है, बेटी जैसी है, but बेटी का treatment and बहू का treatment is completely different. हाँ. बहू is not allowed to wear anything above the knees, Yeah. whereas बेटी चड्डी पहन के घूम रही है. Yeah. You Boxer know? पहन के घूम रही है. So why she not? Why she? And why is there an allowance as such? Why is this even a conversation? Obviously, Bahu knows what she's doing. So I think that also happens in a lot of home where there is a discrimination between the two girls, Yeah. the two women, and that's also somewhere affects the Bahu. 100%. And even if she's not wrong in her way, but it keeps on playing and feeling that, oh यार ये तो शायद मैं गलत कर रही हूँ. हाँ. It happens a lot. गिल्ट ना, गिल्ट दे दिया ना तुमको, और Guilt तुम just डबल थॉट्स में आ seeps जाते in, हो हाँ. कि यार अब मैं उनको जीतने के लिए ये करूँ या फिर मैं मेरा जो सोचती हूँ वो करूँ, क्योंकि तुम्हारा थॉट तो चला ही जाता है, तो गोस्ट फॉर द बैक सीट. So you get stuck in that you get stuck in two zones हाँ. where one you want the independence, second you also want their approval. या वैलिडेशन. वो उस पे तुम स्टक हो जाते हो, तुम ना फुल ऐसे ऑसिलेट करते रहते हो बीच में कि ओ नहीं पर मुझे तो मेरा इंडिपेंडेंस चाहिए, ओ नहीं पर मैं ये करूंगी ना तो सास को बुरा लग जाएगा. That is not, I mean you can't play both things, you have to balance it out. But that is also very difficult to balance बहुत out. रेयर बैलेंस लोग कर पाते हैं, और Yeah. बहुत रेयर 1% होते हैं जो समझ पाते हैं, बहुएं समझ पाती हैं, सास को सास समझ पाती है बहुओं को. Correct. You know, we rarely we've seen. Yeah. Majorly तो we've seen in your family, my family, my friends' family, आगे पीछे इधर उधर सब जगह पे तो सेम स्टोरी ड्रामा चल रहा है. And that's why we wanted to choose differently. Everyone is struggling कि मैं इस चीज चंगुल से कैसे निकलूं, या फिर एक दूसरे से लोग परेशान ही हैं. Correct. बट कोई बात नहीं कर रहा, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा इसके बारे में, कोई अपफ्रंट नहीं आ रहा बोलने के लिए, नोबडी इज टेकिंग स्टेप कि लग रहा है गलत ना तो स्पीक अप. नो. Yeah. मेरे घर पे यू नो women who are coming getting married from outside and coming in this house, they are just चुप रहते हैं, सह लेते हैं तुम, बट बिचिंग के टाइम पे you have to talk about it, but you can't take a stand for yourself. Because it might be difficult for them also It is, to take I a stand, understand of it's course. difficult. But everything is difficult, But right? एक टाइम तक तो once you become the permanent member of the family, now you have you have the power, आपको घर की चाबी दी गई है, that means you have responsibility, right? You have a say now, you can make decisions, you have good grown child, मतलब बच्चे हैं आपके अभी जो बड़े हो चुके हैं जिनकी आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, तो you have such hold power, right? now तो you can take decision, now or never वाली हो सकती है ना, तब तो पावर दिया गया ना आपको, Correct. तब तो बोल सकते हो ना. I think it might. तब तो पावर तब तक बैठ ही जाता है उनका. I think people also get used to a certain living. I- After a point yes. of time, you just accept the scenario, Yeah. and that obviously builds resentment also somewhere. But nobody acknowledges anything. But with all of this, these were our reasons. Yeah. With all of this, we also want to say that we are not anti-family. Yeah. We have seen a lot of good examples where family do work out. The entire living with the in-laws, with the bahu, and we've seen so many people have actually good relationships with the bahu and the sas and in-laws, and my heart really feels good that, oh my god, this is so amazing, just look at them. I mean, look at my example. Before marriage, my situation with my mom, and today, cut to 5 years down the line, after I'm married for 5 long years, and my relation with her, मेरे को उसने 32 years of my marriage, Of your life before 32 marriage. years of my life, yes, उसने मुझे love you नहीं बोला है. बट आज वो फ़ोन करके हाल चाल पूछती है, मैं उसको हाल चाल पूछता हूँ, वो मेरे को लव यू बोलती है फ़ोन के एंड में. फर्स्ट टाइम जब उसने बोला ना, मैं वो स्टेटमेंट ले ही नहीं पाया, बिकॉज मेरे लिए वो एलियन था शब्द, लव यू. From your mom. ये एलियन है, ये कैसे बोल दिया तुमने? आज तक तुमने उसको वो वर्ड को रिस्पेक्ट नहीं किया, या फिर वो वर्ड की डेफिनेशन तुमको नहीं पता थी, या तुमने यूज़ नहीं किया वो. मैं उनके लिए केक लेके जाता था, वो केक धिक्कार देती थी. सम हर पास्ट मे बी मेमोरीज हिट होती हैं, जो भी है, बट दिस वॉज द माई चाइल्डहुड दैट कि मुझे कोई अच्छा इमोशन
देने ही नहीं दिया। हमसे कभी पूछा ही नहीं गया कि बेटा आपका काम कैसे चल रहा है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, हाउ वाज योर डे बेटा, The conversation was salary मिली या नहीं मिली. पैसे मिले कि नहीं मिले वो बताओ, पैसे कब मिल रहे, सैलरी कब आ रही है वो बताओ, अकाउंट में जमा करा दो मेरे पैसे। फ़ोन उठा के ये नहीं पूछेंगे हाल चाल क्या है, मैं कैसे कर रहा हूँ, हाउ एम आई डूइंग, इज़ देयर एनी इशू दैट आई कैन हेल्प यू विद, तू टेंशन मत ले बेटा मैं हूँ। ये वर्ड्स ऑफ काइंडनेस या फिर एक है कि तू तू टेंशन मतलब मैं हूँ, दिस वाज नेवर स्पोकन। But today, today- when you chose your life Yeah. and you chose to When she respect them, saw when मेरी you लाइफ कैसे चल रही है तेरे साथ, how we live, and now as a content creator how we are as couple, एक दूसरे में रिस्पेक्ट है, एक दूसरे में ट्रस्ट है, एक दूसरे में लॉयल है, कितने एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना इज्जत करते हैं हम एक दूसरे और प्यार भी करते हैं, प्यार तो- करते हैं, वो देखा हमारी मम्मियों ने। और now your mom says love you my mom says love you, and she says love you to you also and to me to also. Bisu love you, Bisu Dinesh love you, फोन के एंड में। Yeah, I'm like यार ये तो बड़ा चेंज हो गया, मजा आ रहा है अभी तो। because there was distance and there was no unnecessary drama. She got her space, you got your space. She's growing in her way, you are growing in your way. Yeah. And there is a sweet bittersweet missing each other sort of feeling. Yeah. Where whenever you talk now, you want to ask about each other's day, each other's life, and now when there is distance, you value a little more. And there's gratefulness also. Today your mom is very happy that we don't live with her. Yeah. And we're also very happy that we don't live with her. Now she's like good you took this decision. Yeah, and now whenever there's a call that's happening, she's like, "Oh, love you," and अभी कभी आ रहे हो खाने के लिए, हाँ। ये बनाओ, मैं तेरे लिए कोकी भेजूं, तेरे Yeah. लिए सिंधी खाना भेजूं, तेरे लिए बिस्सू को क्या अच्छा लगता है बता। Now she wants to do the world for us. yeah, that's so sweet. Because that relation has you've given that time And for space relation to also. grow that much. Yeah. And she realizes now whatever Divesh did was right. And she whenever अभी recently उनका अभी सर्जरी कराई हमने, तो मेरे हाथ में लिटरली उन्होंने किस किया Yeah, so कि sweet. थैंक यू मेरा ऑपरेशन कराया तूने, थैंक यू So मेरी सर्जरी sweet. कराई तूने। आई फेल्ट लाइक वाओ यार ये Such an 32 alien साल woman. तक था कहाँ मेरे साथ, वेयर वाज दिस, मैं ढूंढ रहा था इसको, बट वो 32 साल बाद मुझे मिला। बट आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि ये मिला, तो Yeah. आए देर से आए बट आए तो। So today, when I also share a bond with your mom, she's so mindful when she talks to me also. Yeah. She's like कि बिस्सू मैं ये plant लेके जाऊँ. हाँ She's पूछती so है। mindful, and I love that about her, that she's so mindful now. Yeah. Because had it been that I was living with her, it would have been a little taken for granted. Yeah. It would have been कि यार बिस्सू को तो चलता है. हाँ But today she's aware of the boundaries and she respects them. yeah. I also respect what she is as a person. She is a, मेरे को तो बहुत मतलब जो मेरी मॉम निकल के आई है एज अ कैरेक्टर, Yeah, she's a character. Yeah. she has like proved me wrong, I Yeah. would say. उसने मेरे को बहुत wrong proof किया। मुझे ऐसा लगा था कि my mom would not turn up like this, but in turn उसने तो मेरे को खुश कर दिया है, उसने मेरे को बहुत अच्छे वे में शॉक किया है। And तूने भी She proved me wrong. And तूने भी you also proved her wrong, right? Because her biggest fear was that मेरा बेटा बंगालन मेरी बेटी को लेके भाग जाएगा. हाँ That was the biggest fear. बंगालन मेरी बेटी को लेके भाग जाएगा. हाँ But that didn't happen. yeah. So you also proved her wrong. Yeah. You're there for her. You talk to her. You check up on her. You go to meet her. I come to meet her. We have lunches, dinners. Now we meet with intention. We don't meet with obligation. yeah. We don't meet कि अरे यार जाना पड़ेगा. No, we हाँ. happily go now. और ऐसे किसी को टॉन्ट भी नहीं मारते आज की, यार तुम तो आते ही नहीं हो, तुम्हारा तो तुम वो भूल ही गए हो हमको, पता नहीं कब आओगे। ये गिल्ट क्यों दे रहे हो? मतलब ये नहीं होते हमारे आज के बीच में, मिलना है, डिसाइड अ डेट एंड देन वील मीट And chill, like we And chill chill. so much. या दैट Now. इज व्हाट वी लव Yeah. अबाउट। So यही अगर रहते फैमिली के साथ, there would have been unnecessary triggers. या Unnecessary drama, एक दूसरे को fights. एस्केप में घूमते रहते कि भाई सांस आ रही है, छोड़ यार हम जाते हैं बाहर किधर मूवी देखने जाते हैं, या हम दोनों वेकेशन पे जाते हैं, उनको अवॉइड करेंगे हम, बिकॉज देयर इज सो मच फ्रिक्शन Today we don't do amongst each that. other. Yeah. And even when I don't live with my parents also, I mean Yeah. they are not a part of my everyday life.
there's a lot of respect, and my individuality has come out a Yeah. lot, because earlier when I was with my parents, my lives were very entangled with them. Yeah. But today when I'm living alone and I'm building my life, I have found myself. I found, oh, अच्छा विशाखा ये है तू इंसान. भी अपना एक घर बना सकती है, तू मैं भी हाँ. अपनी एक I didn't know इंडिविजुअलिटी, that. you can do your interiors, you can build a Yeah. whole beautiful house together, you have plants, you have balcony, you have क्या क्या नहीं है आज Yeah. हम अपने पास. हम अपने घर पे रहते थे तो वो एक कंडीशन में रहते थे कि यहाँ पे एक टेबल पड़ा रहेगा, यहाँ पे एक कुर्सी पड़ी रहेगी, And वो टेबल पे भी क्लटर पड़ा होगा. क्लटर पड़ा हुआ है, वो क्लटर के You साथ ही know? जीना पड़ता है. Yeah, and so Yeah. now you get space to क्योंकि- have your own house, your own arrangement, your own peace, and organizing your own house. There's a structure. There's a structure in place. So this freedom Yeah. that we have chosen for ourselves. These are the reasons why we chose it. Yeah. Because we wanted to balance out, and we wanted to keep good relations with our parents and in-laws. We didn't want to have unrealistic, unreasonable fights with them. We wanted to actually love them, and for that love to grow, we wanted to have some distance. या स्पेस कई बार बहुत अच्छी चीज़ें प्रूव कर देती है, विच हैपेंड इन आवर Yeah. लाइफ. सो गाइस, ये एपिसोड देख के आपको क्या लगता है? फैमिली के साथ और इन लॉज के साथ रहना चाहिए? आपके कमेंट्स में हमें बताइए. वी वुड लव टू नो आपके फैमिली डायनामिक्स क्या है. And if you agree to the reasons that we have just specified, what are the reasons that you resonated the most with? वेरी इंपॉर्टेंट. And what is your current family dynamics? Let us know in the comments. या वुड लव टू नो. Yes, देवेश, जनता जवाब चाहती है. ठीक है, ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हमको स्पॉट पे ला सकता है. ये आपसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड वी आर रिप्लाइंग टू इट. सो आर यू रेडी देवेश? बिकॉज ये क्वेश्चन जो है, मैं एक मैन्स पीओवी से लेना चाहती हूँ आंसर. ठीक है. ओके. सो देवेश, जनता जवाब चाहती है का क्वेश्चन है, माई बॉयफ्रेंड डजंट गिव मी मच अटेंशन. इज सॉर्ट ऑफ अ रेड फ्लैग. श्योर भी नहीं है खुद. Sort of a red flag, रेड फ्लैग. ठीक है. नॉट फुल्ली ब्रैकेट में लिखा है. ओके. बट आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. अच्छा, डू यू थिंक आई शुड ब्रेक अप और बी विथ हिम एंड ट्राई माई लक? ये इसने एक क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन पूछ नहीं थे. बहुत ज्यादा फ्री हो गए. और ये कुछ नोन स्टोरी नहीं लग रही है तुम्हें? किसकी नॉन स्टोरी लग रही है देवेश? शिट. क्या ये क्वेश्चन मैंने ही तो नहीं लिखा है? Did you plant this question? Huh? So Devesh, tell me, from a man's POV, what would you advise? Okay. It's somewhat our story. Somewhat क्या बोलूँ मैं, हमारी स्टोरी है ये. I was red flag पहले, शादी के पहले. I was that toxic guy जिसमें इतना पोटेंशियल भी तो नहीं था, इतना but ठीक था है. कि मतलब इसको अगर सही दिशा दिखाई गई तो ये भगवान का बंदा बन सकता है. ठीक है, इस पे अगर मेहनत की थोड़ी Zero सी humbleness, but किसी ने, तो द पोटेंशियल ही हैज इज गॉड लेवल. तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले जांचो परखो फिर अपनाओ. देखो अगर उसके आसार लग रहे हैं, वो रेड फ्लैग से थोड़ा उसका कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन में, थोड़ा सा ब्लू में, थोड़ा येलो में, अपार्ट फ्रॉम रेड, तो जस्ट सी टू इट. अगर दिख रहे हैं आसार कुछ भी थोड़े से फ्यूचरिस्टिक, तो टेक अ कॉल. अदरवाइज मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. अगर let me be me है, let me be me, very favorite dialogue है. या तो तुम कट लेना पतली गली से. या अगर उसका है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और चेंज होने के लिए रेडी है, अगर वो बोल रहा है सामने से ये चीज़, आउट लाउड बोल रहा है तुम्हें, तुम्हारे को दिलासा दे रहा है, और वो चीज़ कर भी रहा है बिफोर द मैरिज टू प्रूव यू राइट, देन देर इज़ नो लुकिंग बैक. दैट मीन्स ठीक है, आज वो टॉक्सिक है बट वो सुधरने के लिए रेडी है. ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड यू, ही वॉन्ट्स टू treat you well, he wants to respect you, he wants to be loyal, he wants to do everything to change the dynamics which is now today. तो definitely go ahead with it. अगर ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं, take a call और उल्टे पैर भागो. फिर पीछे मत देखना. ठीक है, पीछे देखा तो वो फंस जाओगी तुम. फंस जाओगे फिर बाद में रिग्रेट करोगे. ठीक है, तो वो सिचुएशन पे मत पहुंचना. सो या आई थिंक दैट्स इट.
So, if you like the answer, पहले तो बताओ कि ये क्वेश्चन कैसा था, बड़ा ही तड़कता भड़कता था. बहुत ही बट ज्यादा. उसके अलावा if you guys have any questions, comments, situation, scenario, सब कुछ comments में डाल दो. एंड हमें आंसर देने में भी बहुत मजा आता है कि यू नो वी लव टू आंसर यू. हमें बहुत मजा आता है कि यार ये थोड़ी बहुत बातचीत करें बहुत तुमसे. डीप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो कीप देम कमिंग प्लीज. And we'll see you in the next episode. So, bye bye.